Hello dear students, welcome back to the video lectures of CK Coaching. Today we are going to discuss the second part of our chapter Human Eye and the Colorful World. Last part of a video में मैंने आपको myopia and hypermetropia के बारे में बताया था. So today in this part of a video I am going to take the next topic which is about the another eye defect presbyopia, जिसको हम old age hypermetropia भी बोलते हैं. इस वाले केस में होता क्या है, द फार ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ क्लियर बट द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज़ अनक्लियर. सो बेसिकली इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस हैपन्स इन द ओल्ड एज, द एजेस अबव द 40 ईयर्स. रीज़न क्या है, मसल्स नियर द आई लेंसेज बिकम्स लूज एंड देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ, जिसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं. सीलियरी मसल्स के लूज या फिर वीक होने की वजह से ये एबिलिटी छिन जाती है या फिर कमज़ोर हो जाती है. Second thing is the near point का shift होना, which is near point of a normal human eye is 25 centimeter, so it just shifted from the 25 centimeter. Correction के लिए क्या करते हैं, we will be using a convex lens of a suitable focal length. Second thing is जो मैं last part of a video में नहीं बताया था, that is we are discussing the eye defect and not the eye disease. So disease and defect में basic difference ये है कि disease can be cured and defect can be corrected. That's the reason हमें correction and reason for that defect अच्छे से याद रखना है. So if you see this is the case here and next हमारे पास याद रखना है कि apart from myopia and presbyopia कुछ लोगों को दोनों combination of myopia and presbyopia भी होता है and in this case they will be using a bifocal lenses. MCQ के लिए हमें याद रखना है that in case a person is suffering from myopia and presbyopia then what kind of a lenses would be suggested, that is a bifocal lens जिसमें upper part is generally the concave lens made up of concave lens to correct the myopia and the lower part is basically made up of a convex lens which is to correct the hypermetropia. Now what is the difference between myopia and hypermetropia? This was a PYQ, a previous year question, जिसमें 3 marks के लिए हमें याद रखना है the difference between myopia and hypermetropia. So we'll make a column here and दो part में divide करेंगे myopia and hypermetropia को. The first part is here that a person who is myopic or a person who has a myopia as a defect can see the nearby object clearly, but when a person is suffering from a hypermetropia the person can see the far off object clearly. So in this case, in a myopia nearby object can be seen clearly, whereas in hypermetropia far off object can be seen clearly. Second thing is that this defect arises due to the elongation of the eyeball, and this defect arises due to the flattening of the eyeball, which we have already seen in the previous video. Then the image of the distant object is formed in front of the retina in case of a myopia, whereas in hypermetropia the image of the nearby object is formed behind the retina. Second thing is that this defect can be corrected by using a concave lens of a suitable focal length so that we have a correct power, and for the correction of a hypermetropia we will be using a convex lens of a suitable focal length so that we have a suitable power. So these are the 4 points of difference which is more than enough for you to write it in a 3 marker question. Let's see few numerical based on this. Now on the numerical point of view हमें 2 बातें याद रखनी है, that whenever a question comes for a myopia or a hypermetropia, so in case of a myopia हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच विल बी ऑब्वियसली अ लेंस फार्मूला, क्योंकि हम आई लेंस की बात कर रहे हैं विच इज़ अ कन्वेक्स लेंस. तो लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, बट इसमें यू एंड वी की वैल्यू में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी. whenever a question comes for a myopia then we will be using u as the infinity and far point of a myopic eye को हम v लेंगे. So we'll see the numerical so that we understand. Let's see this question. It says that the far point of a myopic eye is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct this defect? Now understand this कि power of a lens basically होता है 1 upon focal length. So understand this with the visual कि this is a normal human eye, right? And we'll try to make it a bit distorted so that ये myopic eye बन जाए. आई लेंसेस इस तरीके से बिहेव करेगा, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगे तो मायोपिया के केस में बिफोर द रेटिना इंटरसेक्शन होगा. दैट्स द डिफेक्ट विच नीड टू बी करेक्टेड. इन्होंने बोला है दैट द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर. सो जब भी क्वेश्चन में फार पॉइंट दिया हो मायोपिया का तो यू जो है विच इज द इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट विल बी टेकन एज अ इन्फिनिटी. क्लियर? एंड वी जो है उसको हमको लेके चलना है जो भी डेटा दिया है. एंड इन केस
दोनों ही केसेस में हमको नेगेटिव साइन यूज़ करना है। रीज़न बीइंग, हम जो भी इमेजेस बना रहे हैं वो आई में बनेगा और दैट विल बी ए वर्चुअल इमेज, राइट। सो वर्चुअल इमेज के लिए हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है वो हम नेगेटिव ही लेके चलेंगे। सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट एफ हियर। क्यों? क्योंकि पावर चाहिए होगा, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। सो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं विच इज़ गिवन एज u इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसमें माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, रीजन बीइंग डजंट मेक अ सेंस। v की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर। अगेन विल पुट अ नेगेटिव साइन, बीट फॉर मायोपिया, बीट फॉर हाइपरमाइट्रोपिया। गिवन डेटा जो भी u एंड v का होगा हम उसमें नेगेटिव साइन यूज करेंगे। लॉजिक बिहाइंड दिस इज image so formed in a human eye is a virtual image. So to find what? Nature and power. So we'll use the formula 1/v upon 1/u, which is a lens formula, and we'll equate it to 1/f. We'll put the value, power का होता है 1/f in meter. So सबसे पहले हम put करेंगे values को 1/v, which means 1/80. सेंटीमीटर में है, first we'll get the value and then we'll convert. Minus 1/infinity equals to 1/f. So 1/80 लिखेंगे, माइनस 1/infinity will take 0, it will be 0 only, 1/f. So ये हमारे पास आएगा 1/f is equals to 80. So फोकल लेंथ हमारे पास इक्वेट करके -80 सेंटीमीटर आ रहा है। पावर इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 0.8, so we'll put 1/-0.8, so we'll come इन्वर्ट करके -10/8, which is roughly 1.25, -1.25 diopter. Now this negative sign indicates what? Negative sign indicates the nature of the corrective lens. So we already know this is a concave lens. Concave lens का focal length negative होता है. So this is a proof that we have done this correctly. So if you see the correction, तो हम इस तरीके से एक 1.25 diopter का concave lens लगाएंगे and this is how the correction can be done. So a concave lens, conclusion लिखना है हमको, a concave lens of a focal length 80 centimeter is required and the power lens of the lens is 1.25 diopter. Clear? So this is how we will be concluding our answer, and this should be the procedure to handle such questions so that you have no marks deduction. So do we have to draw this diagram? Answer is no, not for the numerical. Let's see the second numerical, which says that a myopic eye has a far point of 2 meter. Again, the data is given in meter. We have to keep in mind that what type of a lenses would be required to increase the far point to infinity. Also calculate the power of the lens. So this is a normal eye. Let's distort it so that it looks like a myopic eye. And this is the scenario. Myopia है, so focal जो भी हमारे पास इंटरसेक्शन होगा लाइट रे का वो रेटिना से पहले होगा. दैट्स द डिफेक्ट विच वी नीड टू करेक्ट. सो हमको v दिया है विच इज़ द इमेज डिस्टेंस विच इज़ 2 मीटर बिकॉज द फार पॉइंट हैज़ बीन गिवन. जो भी फार पॉइंट की वैल्यू v हमको बिल्कुल क्लियरली रखना है कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू दिया होगा मायोपिया में वही हम लेंगे अलॉन्ग विद अ नेगेटिव साइन. सो गिवन डेटा विल राइट u इक्वल्स टू इन्फिनिटी, v इक्वल्स टू -2 मीटर, and we need to find the focal length and the power. So formula which we will be using is against the lens formula 1/v minus 1/u equals to 1/f, and power का ये formula. So solution में we'll put the values and then we'll equate, and then we get focal length as equals to -2 meter. So the concave lens is required because we already know power will be 1/f, 1/2. इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करा, रीजन बिंग हमको अल्टीमेटली सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था. सो नेचर concave lens, power 0.5 diopter. So after the correction, this is how the picture will look like. Yes, this is how the picture will shift, and हमको यही चाहिए था कि exactly at the retina हमारा जो image formation हो वो हो, and this will be corrected. So we'll conclude that the concave lens of focal length 2 cm is required and the power of the lens is 0.5 diopter. Let's see the third numerical, which is based on hypermetropia. The question says the near point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the nature and power of the lens required to correct this defect? And it has been given that assume that the near point of the normal eye is 25 cm. Hypermetropia के केस में V जो होगा वो near point of a hypermetropic eye होता है. So इसमें hypermetropic eye का near point दिया है 1 meter, तो that will be V. U, if nothing is given, then we'll take the near point which is 25 cm of a normal human eye. अगर दिया है then we will be taking as per the data. इस केस में खुद बोला है
assume that the near point of our eye is 25 centimeter. So this is how the hypermetropic eye is. Distortion के बाद कुछ ऐसा दिखेगा. हाइपरमेट्रोपिया के केस में इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना होता है. सो हमने ये देखा है यहाँ पे. तो v इक्वल्स टू 1 मीटर गिवन डेटा है, u इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर. माइनस इसलिए क्योंकि बीट मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया सिंपल ट्रिक याद रखना है. यू विल यूज द डेटा विद अ नेगेटिव साइन. सो विल राइट गिवन डेटा u -25 सेंटीमीटर, v equals to -1 meter. So we'll convert it into centimeter so that we can apply it in a lens formula. So what formula we require? We need to find first the nature and the power of the lens. Formula required is 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. Power equals to 1 by f. So solution के लिए when we put the value 1 upon minus 100 minus 1 upon minus 25 equals to 1 upon f. So if I put the value, simplify it taking the LCM, my final answer will be 1 by f equals to 3 by 100. Invert करोगे f equals to 100 upon 3. नॉन टर्मिनेटिंग है, करेंट टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेंगे 33.33 और सिंपली 33.3 सेंटीमीटर. पावर चाहिए 1 upon f. विल यूज द वैल्यू इन फ्रैक्शन. सो 100 upon 33 विच इज +3 डायप्टर. प्लस किस लिए? क्योंकि वी आर करेक्टिंग अ hypermetropic eye, so which looks like this. We'll be using a converging or a convex lens, and convex lens का focal length positive होता है, and this is how the correction can be made. And after the correction, exactly at the retina, image formation will take place. So how do we conclude? Convex lens of focal length 33.33 centimeter is required with the power of the lens plus 3.0 diopter. Plus या minus of a lens will indicate the nature. So ये चीज़ ज़रूर से mention करना है. Myopia. A person with a myopic eye cannot see an object beyond 1.2 meter distinctly. Question is, what should be the type of corrective lens used to restore the proper vision? Again, given data है u equals to infinity since we are discussing the myopic eye defect or myopia. v equals to -1.2 meter. We need to find the power. क्योंकि what should be the type of corrective lens used to restore the proper vision में हमें सिर्फ नाम नहीं लिखना, पावर भी बताना है. सो फॉर्मूला ऑफ कोर्स 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. सॉल्यूशन के लिए विल पुट द वैल्यू एंड दिस इज हाउ द थिंग्स विल लुक लाइक. फोकल लेंथ हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 1 upon -1/2 विल बी -0.3 diopter. So this is how we can see that to restore the power of the vision, will concave lens of -0.83 diopter should be used. After this, we have a second topic here, numerical के बाद, if you can see the NCERT book, which is basically the dispersion of white light. Dispersion या फिर scattering. Dispersion in fact हम class 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. To understand this, there is a Newton's experiment which was done using a rectangular glass slab which looks like this, transparent rectangular glass slab. So what he did was कि उन्होंने एक white light को लिया and then उसको पास करा एक edge से. And if you can remember Newton's ring, तो इसमें होता क्या, there are different colors available and because of our inability to perceive a color over a period of time, अगर बहुत स्पीड से घूम रहा होगा तो हम ये डिस्टिंक्ट कलर नहीं देख पाएंगे. कुछ ऐसा दिखेगा आपको स्क्रीन पे. फिर से दिखा रहा हूँ. There are the different colors which you can see over the screen clearly, but if it is rotated with a high speed, then आपको कुछ इस तरह white color का light दिखाई देगा. Exactly the same principle is this dispersion of light. So when a white light is passing through one edge of a prism, it splits up into its constituent color, and constituent color हमारे पास ये 7 colors है, which is VIBGYOR, short abbreviation है. V stands for the violet light, then indigo, then blue, green, yellow, orange and then red. So ये constituent color पे इस तरीके से जो splitting का phenomena है, that is called the dispersion. So how do we define dispersion? The phenomena of splitting of the white light by a prism into its constituent color is called dispersion. So what is this band of color known as? The band of color is basically known as the spectrum. तो दो चीज़ें याद रखनी है. Dispersion is a phenomena and spectrum is basically the band of 7 different color. Clear? What will happen अगर मैं दोनों को merge कर दूं, यानी मैं एक के बजाय 2 prism लूं. So basically उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं what is the cause behind the dispersion. 3 बातें याद रखनी है. I would repeat.
first the definition of dispersion, second is the spectrum, third is the cause behind the dispersion of the light. So cause behind the dispersion of the white light is change in the speed of light with its wavelength. Different colors of the light will bend with a different angle. Bending की बात हो रही है तो white light should go like this straight, but यहाँ पे हो रहा है dispersion, so it will bend. While bending, the different colors light of different wavelength will come out at a different speed. So यानी यहाँ पे हमारे पास डेल्टा मिनिमम होगा किसका, रेड लाइट का. डेल्टा यानी डेविएशन, राइट. नॉर्मल पाथ से डेविएशन रेड लाइट का मिनिमम होता है. सो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी रेड लाइट की ज़्यादा है. सो ये मिनिमम डिस्प्लेस हुआ या मिनिमम डेविएट हुआ अपने आइडल पाथ से. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डेविएशन होता है वायलेट. सो हम बोल सकते हैं मिनिमम स्पीड इज़ फॉर द वायलेट लाइट. सो दिस इज़ द फेनोमेना जो MCQ के लिए हमको याद रखना है, ये लॉजिक. नाउ रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ वाइट लाइट एक सिंपल छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, जिसमें होता क्या है, हम ये दो अलग अलग प्रिज्म को रखेंगे, एक को हम सीधा रखेंगे और दूसरे को इन्वर्ट करेंगे. विल नेम दिस एज ABC एंड दूसरे वाले का नाम EFD रख देते हैं. नेम डज नॉट मैटर. अंडरस्टैंड दिस कि एक के एज से अगर वाइट लाइट को पास करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा डिस्पर्जन. आई एम नॉट शोइंग द एंटायर बैंड, आपको भी नहीं दिखाना है. रिकॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाने को आता है, फेनोमेना ऑफ रिकॉम्बिनेशन. अगेन इस एज से ये रेड एंड वायलेट लाइट निकलेंगे. नाउ दिस E बिकम्स द इंसिडेंट रे फॉर द सेकेंड प्रिज्म, प्रिज्म नंबर 2. अगेन इसकी होगा इसका मर्जिंग होगा और इस पॉइंट पे दे विल बिकम रेड एंड वायलेट लाइट. वाइल कमिंग आउट ये इस तरीके से व्हाइट लाइट वापस प्रोड्यूस करेगा. सो व्हाट वी कैन सी, इफ वी टेक टू डिफरेंट प्रिज्म एंड विच इज केप्ट इन दिस मैनर, देन वी विल सी दैट व्हाइट लाइट एक एज से निकलेगा और दूसरे एज से भी व्हाइट लाइट ही होगा. सो इट अपीयर्स द डिस्पर्जन गेट्स कैंसल्ड. एंड यही एक लॉजिक है या रीज़न है कि सेम व्हाइट लाइट अगर आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करोगे तो देयर इज नो dispersion of light which is taking place, there is just a bending of light. lateral shifting यहाँ पे नहीं होती, but rectangular glass slab में होता है, something like this. rectangular glass slab को अगर मैं बीच से कट करूँ so it behaves like a two different prism. so white light इसमें से पास होने के बाद recombination का फेनोमेना होता है. इस वजह से what we can say that a dispersion does not take place. ये एक simple one marker question है. Why does the white light show no dispersion while passing through a rectangular glass slab, but while it is passing through a prism it shows certain displacement or dispersion, sorry. तो यहाँ पे rectangular glass slab में we'll see that there is lateral shifting, but in case of a prism we see there is a dispersion, splitting of the white light. So इस तरीके से if we imagine a rectangular glass slab to be a combination of two different prism, then we see that the prism will go through the will help the white light to undergo a recombination of it. So that was the logic. Now the second phenomena which we will be discussing in this video is about the rainbow. So rainbow is basically an arc of 7 different color which is visible here. So this is an example of a dispersion which is happening in our nature. So इस केस में भी हमें 2-3 एसेंशियल चीज़ें याद रखनी है रेनबो फॉर्मेशन के लिए. राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट अ रेनबो फॉर्मेशन ऑफन कम इन द एग्जामिनेशन. डायग्राम समझिए, MCQ के लिए भी हमको याद रखना है. फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन इज रेनफॉल, सेकेंड इज द सनलाइट. बोथ शुड बी प्रेजेंट बिकॉज इन अ रेनी डेज इफ इट इज़ अ क्लाउडी डे no rainbow formation take place. So in case of a rainbow, what happens is the raindrop basically act like a small prism. हमारे पास नेचर में raindrop होगा that act like a small prism here, and we'll see when a white light is coming or a ray of light is coming from the sun, then it enters into the raindrop. बहुत सारे drops available हैं, इसलिए हमको बहुत बड़ा एक arc दिखाई देता है. So this black color light is line is basically the normal. So होता क्या है कि इस पॉइंट पे आने के बाद there are two different phenomena which are taking place simultaneously. इस पॉइंट पे refraction and dispersion होगा, then इस पॉइंट पे internal reflection होगा because there is no change in the medium. If there is a change in a medium there will be a refraction happening. इस पॉइंट पे कोई भी medium में changes नहीं है, so there will be an internal reflection. While coming out
there will be a refraction, only the refraction, again दोबारा से dispersion नहीं होगा. So dispersion होने के बाद हमें जो refracted rays कुछ दिखाई देंगे. If you can see here कि रेड लाइट पहले टॉप पे था, रेड लाइट बॉटम पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा इन्वर्जन हो जाता है. सो दिस इज हाउ द रेनबो इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फेनोमेना इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एंड देन we'll see the other part also in our next part of a video. For a time being, I am keeping this video short so that you can revise parallelly, and if in case there is any doubt, you can just drop a comment on this. And if you have liked this video, then make sure that you also subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.